friends, today we will see if the graph of the polynomial is given, how can we find out the number of zeros? For this we have taken 6 different cases. Let us see one by one. The very first one is, this is the graph of the polynomial. In order to find the number of zeros, आपको number of zeros निकालने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा जो गिवन ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. इसका मतलब फॉर दिस पॉलिनोमियल देयर एग्जिस्ट नो जीरो. दैट मीन्स इन द वेरी फर्स्ट केस वी डोंट हैव एनी जीरो. सो यू कैन राइट नो zeros. Okay. Now let us come to the second case. In second case, when you see the graph of the polynomial, you see that this graph intersects the x-axis at one point. So it has got 1 0. हमेशा आप याद रखिए कि आपका जो जीरो होगा वो पॉइंट होगा जहां पे वो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस. नाउ व्हेन वी मूव टू द थर्ड केस वी सी दैट दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 points. That means here we are having 3 zeros. Here we are having 3 zeros. Okay. कम टू द फोर्थ. यहाँ पे आप देखिए आपका जो गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे 2. सो 2 zeros. You have to write the reason also, since the graph intersect at 1 point, therefore number of zero is 1. Here also graph intersect the x-axis at 3 points, therefore number of zeros is 3. Here it is 2 point, that is why it is 2 zeros. Here you can see 1, 2, 3, 4. So we are having here 4 zeros, and when we come here this is 1. You can see here the graph is touching the x-axis, so again this will be considered as only 1 point, and here also 1 point. When it is touching x-axis, that means it is to be considered as 1 point. So here we will be having 3 points. 3 points, so you can write 3 zeros. So this is the way how we see when the graph of the polynomial is given, how it intersects the x-axis. Accordingly we find the number of zeros. Thank you.